Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are revising your exams. Yes. Okay, students, after a long time, I am making a video for you. That is diary writing. This is a new topic for you. So, before doing it, I am going to explain. What is diary writing? A diary is a safe place where you can be honest and candid about your thoughts, feelings, and opinions. Students, writing a diary entry is very different from writing a letter or a passage. You have done passage writing, letter writing, but this is something different. A diary entry is a short composition, a record of the writer's feeling, thoughts, and happenings during a particular day. You can be a writer. तो राइटर कौन है इसमें? आप भी हो सकते हो राइटर. ठीक है? Maximum people used to write a diary. Yes. So अगर आपको इस तरह की हैबिट है, वैसे अच्छी होती है ये डायरी राइटिंग की हैबिट, कि अगर हम खुश हैं, दुखी हैं, when we are happy और when we are sad, तो हम अपनी फीलिंग्स को डायरीज के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है? A diary entry is a section or writing that has been organized by date. Definitely, डायरी एंट्री में हम क्या करते हैं? सबसे पहले we write date. Okay? Date your entries. Write the date and place for your diary entry. Pick a topic. You can write about anything. It can be about what you did today or about an upcoming event. It means you have to choose a topic. Like आज आपका बर्थडे सेलिब्रेशन था और आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो. You want to write and you want to share your feelings with your diary. Today you are very sad. So you can write diary. Write naturally. Don't feel like your entries have to contain sentences like you are writing answers in a test paper. Like आप इसको एग्ज़ाम की तरह मत लो कि आपने एक एग्ज़ाम में लिखना है, कहीं गलत हो गया तो आप स्केयर्ड हो. नो, फील नेचुरली, राइट नेचुरली. दे आर जस्ट फॉर यू, सो रिलैक्स एंड गो फॉर इट. कि आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करनी है, किसी ने आपको उसमें मार्क्स नहीं देने. गो फॉर इट. डोंट अफ्रेड अबाउट एनीथिंग. बी ट्रूथफुल व्हेन राइटिंग योर डायरी. अभी आपकी डायरी है तो आपको इसके लिए क्या, ऑनेस्ट होना है. क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप किसी को शो ऑफ करने के लिए डायरी लिख रहे हो, आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए डायरी राइटिंग कर रहे हो. बी ट्रूथफुल व्हेन राइटिंग योर एंट्री. ट्राई एंड बी बेस्ट एज ऑनेस्ट एज यू कैन. Make it a habit. The more frequently you write entries in your diary, the more you will enjoy doing it and the more you will learn from them. And definitely diary entries develops your writing skills, sharpens your vocabulary and improves your grammar and spellings. Definitely, when you write something, it will improve your writing skills. The main purpose of diary entry is to improve your writing skills. Now, this is just an example how to write. First, we have to write date, time. Salutation means greeting. Dear diary. Contents or body of the diary entry. Signature. Okay? Okay students, I have chosen this topic because ये आपको टॉपिक थोड़ा मोटिवेट करने वाला है इन एग्ज़ाम्स के लिए. You are Karan, a student of class 5th. You have been distracted from your studies and have not performed well in essay 1. Write a diary entry in 50 words describing why this has happened and your resolution to do better in essay 2. Okay students, date, day, salutation, dear diary. Today I got my essay 1 exam results. My performance at the same is very disappointing. I have been distracted from my studies because of spending long hours playing games on the computers. Now I understand that time and tide waits for none. It means कि time और tide किसी की wait नहीं करते हैं.
What is the meaning of tide? The regular upward and downward movement in ocean. ओके कि ये किसी का इंतज़ार नहीं करते हैं. अब जैसे ग्लेशियर आपने देखा होगा उत्तराखंड में हुआ ना, अचानक से कितना ज़्यादा लॉस हो गया. तो इसी तरह कि कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है, तो टाइम के अकॉर्डिंग हमें सब कुछ मैनेज करके रखना चाहिए. आई हैव डिसाइडेड टू बी रेगुलर इन डूइंग माई रिविजन वर्क and practicing extra questions from reference books. I will certainly quit my addictions. It means कि जो मुझे आदत मोबाइल की लग गई है तो मैं फटाफट से अब उसको छोड़ने वाला हूँ. To mobile games to perform well in essay 2. Karan. And one more topic I am giving you and I am sending you PDF. So you have to write these 2 topics in your notebooks. Thank you. Have a nice day. Bye-bye.